The recent Mahakal Puja attended by the Chief of Army Staff and Defence Minister Rajnath Singh has unfortunately, viewers, become a battleground for those who seek to cast aspersions on the valor and integrity of our armed forces. This critique is not just misguided, it's an affront to the very essence of what it means to serve in the Indian Armed Forces. Viewers, are soldiers from the highest ranks to the newest recruits do not serve a religion, they serve a nation. The idea that their participation in a religious event somehow detracts them from their professional integrity or impartiality is not just baseless but also deeply offensive. Think about it. Our military's valor is not measured by the absence of religious practice but by the courage, discipline and the dedication they exhibit in the line of duty. Viewers, they defend us all, regardless of faith, because their faith is in the nation. They protect. That's all. Faith, viewers, is extremely important for soldiers. In a profession where life hangs by a thread, people tend to repose greater trust in God than almost any other profession. Why grudge them that? Let us not allow the sacred act of puja, a moment of cultural and spiritual significance, to be turned into a political football. Viewers, the Indian Armed Forces embody the spirit of Bharat, where every faith finds its place under the tricolor. To demean their acts of faith is to demean the very fabric of our nation. अब चूंकि राजनाथ सिंह जी वहां गए हैं तो लगता है कि आर्मी चीफ उस मंदिर के महंत हैं जो राजनाथ सिंह की अगुवाई कर रहे हैं। आर्मी के का जो लोग हैं वो किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो हर एक की हिफाजत करते हैं। राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ दे आर फ्री टू परफॉर्म पूजा और रिचुअल्स एक्सेट्रा, बट टुगेदर डूइंग इट, that means it becomes official. The allegations against the BJP that BJP is against the constitution right from the beginning proves it. Nobody should have any problem with whether it's the Chief of Army Staff or the Raksha Mantri or anybody in this country celebrating their own faith. Anybody who has a problem with that can go look for a hole and bury themselves in it. जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने राजनाथ सिंह जी और आर्मी चीफ का मखौल और मजाक उड़ाया है, हिंदू आस्था के प्रति इतनी घृणा है, हिंदू देवी देवताओं के प्रति इतनी घृणा है। इससे पहले हमने देखा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहा गया। साल के अंत आते आते भी इसी प्रकार का हिंदू आस्था पर चोट और हिंदू आस्था का अपमान करना जो शुरुआत से हमने देखा है। Let's open this up. Pradeep Bhandari, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Tushar Gupta, political analyst, Vivek Srivastava, political analyst, Kamruzaman Chaudhary ji, and Professor Monojit Mondal complete the panel. Tushar, were you surprised when you saw the picture and the kind of commentary that accompanied the visuals, pictures, what have you, of the Chief of Army Staff with Raksha Mantri Rajnath Singh? Good evening, Pranesh. No, I wasn't surprised by the pictures that surfaced. And I was also not surprised by the commentary because I expect nothing better of the opposition. These are the same people who question our military when it comes to surgical strikes, when it comes to strikes against Pakistan. These are the same people who stand against strategic instructions in the areas of surrounding the LAC and the LOC. But you know, I'm surprised by the ignorance of these people. These people do not even know the regiments of the army and their war cries. Today, someone like Saket Gokhale of the TMC will stand up and say, hey, look, J&K Rifles is not patriotic enough because their battle cry is Durga Mata Ki Jai. Then someone will say Bihar regiment is not patriotic enough, not secular enough because their battle cry is Jai Bajrang Bali. Someone will then say that the Madras regiment is not patriotic enough or some other regiment is not patriotic enough. Pranesh, the truth is these people do not understand the ethos of the military. They don't understand how the military functions, how secular it is, how patriotic it is. These people are just looking for poor, shallow opportunities to peddle their political agenda. And today, again, they have proven what their worth is, which is an absolute big fat zero. Vivek Srivastava? I was just listening to all the opposition bashing करो opposition की, यही तुषार का काम है. Debate after debate, night after night, that is all that he does. मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, what business has the army chief got? और रक्षा मंत्री को देखिए साहब,
उनको लेके साथ में पहुंच गए। ये कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू यार? व्हाई इज द आर्मी ट्राइंग टू प्रमोट वन पर्टिकुलर रिलीजन? आपको धर्म का पालन करना है, पर्सनल लाइफ में करिए ना। ये आर्मी चीफ का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए कोर्ट मार्शल। ये रूल बुक के खिलाफ है। ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? और कल अगर हिंदू मुसलमानों में दंगे होते हैं एंड यू फील द आर्मी टू कंट्रोल द राइट्स, are you sure that the army is going to Vivek Srivastava, one minute. minute. You know, the year is ending, but what hasn't changed is your mindset. I just hope the better sense prevails next year, sir, which is tomorrow. Let me 1 minute. You want the army chief to answer for this? आप बोल रहे कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं सुनिए, आप सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव। I didn't even ask you a question. I just said Vivek Srivastava and you started. I wanted to wish you Happy New Year. अब आप सुनिए क्या है। 21 अप्रैल 1959 इंडियन एयरफोर्स का मोटो फाइनलाइज हुआ। पता है सर मोटो क्या है? नभम स्पर्शम दीप्तम। और ये कहां से आता है? 11th चैप्टर है भगवत गीता का। ईयर फिर से बता देता हूं, 1959। ये जो लोग हैं उनको, दे आर नॉट अलाइव, उनका कोर्ट मार्शल कर देते आप। आपने प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 5 शब्द हैं, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट मेरे सबसे प्रिय हैं। उसमें 3 और शब्द भी हैं। एंड वट एवर एनीबडी डज इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मी कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। I am asking you, was Nehru against the preamble or the constitution? Answer the simple question, Vivek Srivastava. Was Nehru against it? 1959. देखिए, ये आंसर द क्वेश्चन। देखिए, मैं देख रहा हूं, आप जवाब दीजिए। कल्चर के शब्द डालिए। ये महाकाल में जाकर के पूजा करने आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये ड्रामा है। बिल्कुल प्रदीप, तो साफ I don't think you were prepared to hear this. Pranesh, I am extremely offended because Mr. Vivek Srivastava's Hindu hatred, and it's just not Vivek, its entire opposition is out in the open, and on the last day of the English New Year, they decide to continue that. In 1948, India's first naval ship, Jal Usha, was launched, and it was launched after Puja. So does it mean that at time Mr. Nehru was against the Constitution of India when in 1948 this was done? And if I take Mr. Vivek Srivastava's logic forward, let me just read the war cry of all the regiments. Rajput Regiment, Bol Bajrang Bali ki jai. Sikh Regiment, Jo Bole So Nihal. Jat Regiment, Jat Balwan, Jai Bhagwan. Dogra Regiment, Jwala Mata ki jai. Maratha Regiment, Har Har Mahadev. Bihar Regiment, Jai Bajrang Bali. Punjab Regiment, Jo Bole So Nihal. So does it mean that all of them are communal in nature? Vivek Srivastava comes from Azam Khan's school of thought where they wanted Muslim reservation, and if it's logical, the army chief is a Hindu and he will go to a Hindu temple to practice his faith. But his Hindu hatred is just 10 seconds, Pranesh. Their Hindu hatred is so huge that they call us army chief Sadak Ka Gunda. They will ask surgical strikes proof, and all of this is echoed by Pakistan. We are not an Islamic military, for God's sake. I just want to make one correction. There is no Azam Khan school of thought. It is Azam Khan Madrasa of thought. And Vivek Srivastava has not been regular even in that place. Vivek Srivastava, अब आप जवाब दे दीजिए। 48, 59 इतने एग्जाम्पल्स हैं सर, बताइए। अरे एग्जाम्पल कुछ नहीं है। नेहरू ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना कर दिया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सोमनाथ मत जाओ, गलत मैसेज जाएगा। वो तो रशिया के साथ थे, कम्युनिस्ट के साथ थे। नहीं, तभी जाके पतन होना शुरू हो गया था। नहीं, सुनो विवेक जी, तभी जाके पतन होना शुरू हुआ। You come from communists do not believe in religion, do not believe in army. You were batting for the Chinese at the time of the LAC standoff. अरे you stand for the Chinese army more than the Indian army. कोई चाइनीज आर्मी नहीं थी। आप तीनों चीफ के नाम तक नहीं बता सकते ऑन एयर शो पे। इंडिपेंडेंस के 10 साल हुए थे, मुश्किल थे। इंडिपेंडेंस के समय आप चाह रहे थे बाल्कनाइजेशन। वो नहीं बोलेंगे, वो बोलिए उनको कंडेम द चाइनीज आर्मी। बोलिए डाउन विद पीएलए। बोलिए विवेक श्रीवास्तव डाउन विद पीएलए बोलिए। नहीं, डाउन विद पीएलए क्यों बोले? वो सुदेश की आर्मी है, वो जाने उसका काम जाने। मैं अपनी आर्मी की जिंदाबाद बोलूंगा। डाउन विद पीएलए। अरे विवेक श्रीवास्तव, आप क्या चाहते हो भाई? वेयर विल यू स्टॉप? आपको बादशाह और अल्लू अर्जुन में फर्क नहीं है। आप डाउन विद पीएलए नहीं बोल पाते, आप हमास को कंडेम नहीं करते। व्हाट आर यू विवेक श्रीवास्तव जी? सर किसी देश की आर्मी हो, आप बोलिए डाउन विद पीएलए में क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी आर्मी बच जाए,
इन भगवाकरण वालों के। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, हाँ, साइमन गो बैक बोलेंगे? साइमन गो बैक? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। ये दिस इज बेसिकली फासिज्म कमिंग। Fascism coming, yeah, started during Nehru era. Fascism still continues. 1 minute, विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट सर प्लीज, एक छोटा सा सवाल है। इफ्तार पार्टीज जब होती हैं तो सेक्युलर नेचर है उनका, कम्युनल नेचर है, या क्या है, वोट बैंक नेचर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इफ्तार पार्टी? मैं आपको बता देता हूं। अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो 85% है, वो एक कमजोर गरीब जिसने तरक्की नहीं करी है, उस कम्युनिटी को अपने से हिंदू जाके महाकाल के मंदिर भी जाएगा, ये क्या चाहे उपेंद्र भी जाके क्या इफ्तार पे जाए? नहीं, वो जाते हैं, इफ्तार पे भी जाते हैं। पर ये क्या कह रहा है हिंदू? नहीं, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? विवेक श्रीवास्तव, जो हम पिक्चर्स चला रहे हैं सर, आपने पढ़ा भी तो होगा, आप तो पढ़ते लिखते हैं, आपने तो सैटेनिक वर्सेस पढ़ लिया था इवन व्हेन इट वाज बैंड। I don't know, you haven't told us how you got a copy, but you know, that's a separate thing. Vivek Srivastava, now answer my question. You know, army jawans and army officers also observe other festivals, other rituals. Sir, आपको पता है, जो जवान का faith होता है, वो officer का faith बन जाता है. So why are you, first of all, I have two objections. Why are you mocking this puja? And the other is, why are you using this to, you know, belittle their valor? आपके बोलने से हो नहीं जाएगा, but why do this? नहीं, देखिए, I'll tell you what. See, please try to understand one thing, Pranesh. Minority community जो 14% होती है, that is in a very vulnerable position. But this is not about minority, majority. विवेक श्रीवास्तव, आप फौज के थ्रू देश को मैसेज दे रहे हैं कि हम फौज का भगवाकरण करेंगे, हिंदूज फर्स्ट। अरे विवेक श्रीवास्तव, उपेंद्र द्विवेदी इज अ हिंदू, ही विल गो टू अ टेंपल टू वेनर, और पूजा करने मंदिर में ही जाएंगे। आप विवेक श्रीवास्तव एक धर्म कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं? श्रीवास्तव, आप एक मिनट सुनिए। No, he's saying he wants to. No, Vivek Srivastava said yes. You want him to convert to prove his secular credentials? Do you want the army chief to convert? भाई मेरी बात बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, गणेश की पूजा करी, हमने ऑब्जेक्ट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, पर जब बालकृष्ण जी इफ्तार में गए तब आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर, जब बालकृष्ण जी इफ्तार में गए थे मनमोहन सिंह जी और निरुपमा राव के साथ में, तब आपने नहीं ऑब्जेक्ट किया था। Okay, Vivek Srivastava, sir, let the others also come in. Kamru Zaman ji and Monojit Mondal haven't spoken. Monojit Mondal, what do you make of this controversy? Do you think it's a needless controversy? You know, such commentary is not right, is in bad taste? So you see, you know, we hold the army in highest regards, of course. Any army chief can follow his or, you know, her religion, but it should be followed in private. What really triggered off this absolutely needless controversy, I think, is the fact that he was accompanying a politician in the form of the defense minister. That should not have happened, right? I think otherwise he can go along with his family to offer pujas in a temple, or even the colonels who are, you know, offering namaz is absolutely all right, because that's what our constitution says. But when you are accompanying the defense minister, it appears that perhaps you are shadowing him. Army doesn't serve anyone. You know, when people like Vivek Srivastava say that there is an attempt to saffronize armed forces, do you endorse that? Supremely commanded by the President of India, not by No, I understand that. I understand that, Professor Mondal. I'm asking you on a comment made by Vivek Srivastava. He says there is an attempt to saffronize our forces. Do you endorse that? No, I want to go into that line, but there could Kamru be Zaman some Chaudhary, reasons for him to sir, say this. what do you make of you know, what we are discussing? Yes. Yeah, Pranesh, I request you to give me just 1 minute of your time. You know, the political Hinduism coupled with the pseudo-nationalism is very dangerous for the country. You are very right when Vivek ji has told that the saffronization of the armed force, was it there right from 1947 or has it started recently? Of course it was there, but people were doing it in a secular fashion. You go to any cantonment, you will find a mandir, a masjid, a gurdwara, a church in every cantonment across India.
That is the secular nature of the Indian Army and the Indian Constitution. Now let me cite a very recent controversy that erupted in the Army Chief's lounge with regards to the painting. You removed a 1971 war painting. We coupled with a what you call a mythological painting out there. You tell me what was Chanakya doing out there? What was Chanakya's role in that? What was Lord Krishna's role out there? 1 minute. Now you tell me, if listen to me. Chanakya I just was have so on the point that you are making, sir. Please allow me. Kamru Zaman ji, allow me, sir. Then why did India break into so many territories? ये क्या कहां से कहां जोड़ रहे हैं सर? 1 मिनट. पहले तो आपने बोला सैफ्रनाइजेशन वाज देयर बट इट वाज डन इन अ सेक्युलर फैशन. इस पे तो यू नो दिस विल आई थिंक टेक मोर देन 50 scholars to decode what you mean. But I don't want to go there because I frankly don't have the time. Nor do I have the patience right now. You answer, you know, the point that you made. कि वो फोटो हटा के लगा दिया. कहां हटा के क्या किया? उसको हटा दिया? Was the photo junk? Where was it placed? No, it was placed in the Manekshaw's then museum. who was Manekshaw? That's right out there. Who was Manekshaw? What was the significance of replacing? Yeah, he was the army chief. Then you he was go. the army Then, chief who then, made to, then why are you? Pakistani army to surrender. Then why are you making that an wait, issue? the I'm larger asking you point the that I'm larger making out question. here- No. Do people in the armed forces, are they entitled to their faith or not? If the chief of army staff is going there, doing puja, offering his prayers, what's wrong? विवेक श्रीवास्तव बोल रहे सैफ्रनाइज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पहले भी होता था सेक्युलर तरीके से. Pradeep gave you an example. I read out the example from 1959. Was there an attempt by Pandit Nehru to saffronize? Yes, listen, Pranesh, the basic point out here is that the way the saffronization, or rather I will call is the Hindutvization of the armed forces. We have seen how the saffronization of the police forces in various BJP ruled states has been completed. Like we have seen how the SP of Sambal is acting nowadays. So you want to get into that type of saffronization of the armed forces. Are you going to come out of that rat hole in the near future? My question is that the saffronization of the armed forces is very dangerous for the country. Okay, Pradeep, respond to that. There are hundreds and thousands. Tushar, I'm coming to you. I'll just take 10 seconds. On 3rd September 2021, I'll tell you their mindset. The DMC College of Defense Management decided to teach in the College of Armed Forces Arthashastra of Kautilya and teachings of Bhagavad Gita. You know what the Congress Party spokesperson KK Mishra said? Why are you doing this? Muslims also have contributed in the armed forces. This is their psyche. They want to communalize the armed forces and they cannot digest the fact that anything to do with our culture is taught, and a Hindu cannot go to a temple as per their logic. That is what they are saying. They want Mr. Dwivedi to convert, go to a mazar or go to somewhere else and do it. This is exactly their heights of Hindu hatred. Tushar. विवेक जी आ रहा हूं मैं आपके पास. विवेक श्रीवास्तव, आई एम कमिंग टू यू सर. होल्ड योर हॉर्सेस. आ रहा हूं. I listened to Vivek Srivastava and I must admit, I realize how brain dead communists are. What will these people understand about the army? Pranesh, their manifesto, CPIM's manifesto for 2024, you know what it said? That the CPIM works for the elimination of all nuclear weapons. They want India to give up their nuclear weapons, and here Vivek Srivastava will lecture on the secularism of the army. Mr. Srivastava, hear me out. If you think that the chief of the army practicing his religion is fascism, then be prepared to live under this fascism. Okay, no one is going to take your credibility or your credentials or your acceptance for practicing their religion. You keep blabbering, you keep feeling frustrated. No one gives a damn. No one gives a damn about Vivek Srivastava. That's your reality. I mean, just think about it, sir. You can't even get yourself to say down with PLA. अब कुछ बचा है पूछने के लिए? नहीं वो नारेबाजी से कुछ होता नहीं है कि डाउन विद द अमेरिकन आर्मी, डाउन विद द जर्मन आर्मी. इससे क्या होने जा रहा है? एक बार बोल दीजिए ना. अगर कुछ नहीं होगा तो डाउन विद PLA बोल दीजिए. पब्लिक में सुनिए सर, सुनिए शुद्ध हिंदी में. प्रदीप भंडारी कान खोल के सुनिए. आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर ईव है. मैं एक ही डिबेट कर रहा हूं सिर्फ. मैंने कोई नहीं की डिबेट. सिर्फ जब प्रणेश का पता चला डिबेट करी. एंड इट्स अ वॉर क्राई फ्रॉम द कम्युनिस्ट. प्रदीप भंडारी, तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को 2025 में सोने नहीं देंगे. अच्छा, मत दीजिएगा सोने पर. आर्मी का अपमान मत करो, सड़क पे गुंडा मत बुलाओ.
भाई ये प्रदीप भंडारी के बारे में नहीं है ना बीजेपी के बारे में, मेरे बारे में नहीं है, ये हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में। You can abuse प्रदीप भंडारी और लीडर्स ऑफ द बीजेपी। सर नो विवेक श्रीवास्तव, आई नो यू नॉट अब्यूजिंग, आप उससे आगे चले गए, लेकिन आप सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका तो ध्यान रखिए। आप बोल रहे कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। आदमी को इंडिया अलायंस में होना चाहिए था, ये गलती से वो उस तरफ चले गए। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि जितने टैलेंटेड लोग हो सही दिशा पकड़े और सही जगह पे आए। सर मुझे विवेक श्रीवास्तव, अगरबत्ती को सर सुनिए, अगरबत्ती और दिए को पब्लिक में ले जाने से क्या इंडियन आर्मी चीफ से भगवान ज्यादा खुश हो जाएगा कि टीवी पर दिखा रहे हैं वो पूर्व पूजा करते हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर करते ही थे तपस्या बैठ करके कैमरे के सामने, तो वो क्या आर्मी चीफ पकड़ लिया है? अच्छा, तो इसमें कौन सा भगवान खुश होगा? इसमें एक बात बढ़ेगी, कौन सा राम आशीर्वाद देंगे? क्या बोल रहे विवेक श्रीवास्तव? डोंट डू दिस सर, आई हैव टू थ्रो यू आउट ऑफ द पैनल। 1 मिनट, यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस। यू नो ये जो आप बोल रहे हैं सर, विल यू से दिस अबाउट अ मौलाना? आप बोलेंगे किसी मौलाना को कि आप ये पहनने से क्या हो जाएगा, टोपी लगाने से क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसे करने से क्या हो जाएगा? नहीं बोल पाएंगे ना विवेक श्रीवास्तव। प्रॉब्लम तो ये, यू सी यो विवेक श्रीवास्तव, आई टेल यू व्हाट योर प्रॉब्लम इज। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आपने जहां से जो भी स्कूल ऑफ थॉट, मदरसा ऑफ थॉट है आपका, वो इनकम्प्लीट है। वो इधर से शुरू तो होता है लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वो आप उसको एज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर मेड इन न्यू ईयर। आपका क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? कुछ है विवेक श्रीवास्तव? विल यू 1 मिनट सर, 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, लेट मी ट्राई एंड हेल्प यू सर, एज योर यंगर ब्रदर, लेट मी हेल्प यू। आप पहला रेजोल्यूशन तो ये रखिए कि जो डिबेट है उस पर पूरी तैयारी रखें, एक पहला रेजोल्यूशन। दूसरा इज टू टॉक सेंस एंड बी सिविल विथ पीपल एंड ऑन इश्यूज। Kind of things that you've said about the armed forces and about, puja, prayer, Sanatan is despicable. Even, people of India Alliance, Professor Mondal Tamruzaman ji will not endorse some of the things that you've said. And when you are asked a question about a terrorist, you go silent. आपसे China condemn नहीं होता विवेक श्रीवास्तव. What are you talking about? In any case, I wish all of you a happy new year. I just hope that better sense prevails. Let's leave it at that, viewers. Thanks for watching.